Okay, so all of you, please log into your our test maker platform. You want to bring Nandi? Okay, before we start, जो online classroom fundamental rights chapter we have important chapters. Whether on आपको भी doubts तो भी अच्छी तरह any doubts then you can ask. Else we will start. आज हमें first 2 hours हमें MCQ discuss करिए. Okay. ଆଉ ତାପରେ then next 2 hours we will discuss the descriptive questions. Okay, previous year जो descriptive question रा अच्छी सेगुड़ा हमें discuss करिए. So any doubts you are having, okay, then you can ask. So let us start. First question Nala, which of the following statements are correctly matched regarding fundamental rights? पढ़िबा सेथरे देखिबा केबे केबे पचराइथिबो कोनटा स्टडी हां माने एग्जैक्ट माने कोन हमको डायरेक्ट भी देखिए पड़ी ओके कौन से टेक्स्ट बुक रे लक्ष्मीकांत हला कि दीदी बसु हला कि जोटा भी हला आपनकर जो नॉर्मल बुक्स रा एमपी जैन हला ओके तो माने ऑप्शनल रे पढुछन सेटा कि ए सब बुक्स रे वो डायरेक्ट तो मेंशन नहीं तेणु आप केवे भी डायरेक्ट पढ़ी ना सीधा परीक्षा देवे कौन असुविधा हो पारे से आज लास्ट क्वेश्चन देखिए ओके सो एनीवे एटी क्वेश्चन पचारला which of the following statements are correctly matched regarding fundamental rights in article 25. So let us see freedom of conscience, that is inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires. जे भक्त भगवान ताको भीतर जो रिलेशन ता से भक्त केमिति भगवान को पूजा करिवो कि को मेथड रे करिवो कोन करिवो ताको रिलेशन ता से पब्लिक करिवो कि नहीं निज भीतर रखो एटा कंप्लीटली तार राइट ओके सो दिस इज देयर एटा ठीक है तापरे राइट टू प्रोफेस दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ बिलीफ्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली ओके एटा भी बीच हमारा 25 राइट टू प्रैक्टिस performance of religious worship ritual ceremonies and exhibition of beliefs and activities. So all of these are correct. So which of these are correctly matched? এটা भी মধ্যে মধ্যে লিখতে correctly matched কি incorrectly matched সেটা সে পছন্দ করে তো সবগুলো correctly matched তো all of them will be there. Okay. তারপরে we can do detailed explanation. No freedom of conscience, freedom of individual. Or right to profess, that is declaration of beliefs and faith, open performance of religious worship will be the correct answer. Okay. Now come to the second part. Question 2 को आसନ୍ତୁ तो एथरे किसी डाउट अछि यदि you can ask. Now come to question number 2. Which of the following prohibits? Okay, which of the regarding Article 27? Okay, regarding Article 27, which of these are correct? The state from favoring one religion over another. That is correct. The taxes cannot be used for purpose of maintenance of all.
फेवर करिया पे आपण बट पूरे रीजन ओके स्टडी Hello, sir. Hello. taxpayers money to go. So for one religion, it is not permissible. ठीक ଅଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଲିଜନକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ସେଇଟା ଆମର ସେକ୍ୟୁଲାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ରିଲିଜନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର ମନି କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଓକେ ତେଣୁ ଟୁଟା ଭୁଲ ଅଛି ତ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଫର ପ୍ରମୋସନ ଅର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ ଅଲ୍ ରିଲିଜନ୍ସ ଏଠି ଅଲ୍ ୱାର୍ଡଟା ଓକେ ସେଇଟା ହେଲା ସୋ which of these are correct right so it is the taxes cannot be used for promotion or maintenance of all religions so that is wrong it can be used for promotion and maintenance of all religions okay so aji basically kon ame ethare ye re live now in the sense ki apanakar jo online students you can write jaha bhi apanakar doubts achi apan taku chat box ରେ ଲେଖିଦେବେ ଓକେ ତ ସେଟା ଇଜି ହେବ ଜାଣିବା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଅଡିଓଟା that is being directed to the projector ଠିକ ଅଛି ତ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭାଯାଉଛି ସେଟା okay so 2 is not correct 1 is correct 2 is not correct right so only one is correct you can go through the Article 27 lays down that no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. Any particular religion, say it as a coach. Okay, the catchword is that any particular religion. But for all religions, yes, government can. Okay, okay. The state should not spend the public money collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion. The provision prohibits the state from favoring, patronizing, and supporting one religion over the other. This means that taxes can be used for the promotion or maintenance of all because the purpose of the fee is to control secular administration of religious institutions and not to promote or maintain religion. Okay. तो फीटा भी ओके सेटा जोड़ा हमें डिस्कस करिथिलु क्लास रे किछि गोटे यूजर फी जदि से मान दउचंदी दैट दे कैन चार्ज ओके सो it is secular administration of religious institutions and not to promote or maintain religion. Thus, a fee can be levied on pilgrimage to provide them some special service or safety measures. ଯେମିତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛୁ ତିରୁପତିରେ ତାଙ୍କର ଭିଆଇପି ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଠି କି ନର୍ମାଲ ଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ବେଶୀ ଟାଇମ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଭିଆଇପି ଲାଇନ୍ସ ରେ ଆପଣ ଗଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ପଳେଇବେ ସୋ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସର୍ଭିସ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନଟ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ରିଲିଜନ ବଟ୍ ଯୋଉଟା ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଏ ସେକ୍ୟୁଲାର ଓକେ maintenance or secular administration of that religious place ଯଦି ସେଟା ହବନି ଏମିତି ନୁହଁ କି ରିଲିଜନ ମେଣ୍ଟେନ ହବନି ରିଲିଜନ ତ ଠିକ ଅଛି ତା ବାଟରେ ସେଟା ଚାଲିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ଫି ବି ନେଇପାରିବ ଓକେ ତ ସେଇଟା that also will not go against it so C will be the answer that means only okay one okay so any doubt in this question now let us go to question number 3 consider the following statements a remedy under article 32 is in itself a fundamental right and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ. Okay, first statement, let us consider that. A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right and hence the Supreme Court may not refuse to exercise its writ jurisdiction. Okay, so this is correct. Article 32 under the Supreme Court
से मना कर परिबेनी जदि फंडामेंटल राइट्स ऑफ वायलेशन आर्टिकल 32 अंडर रे आसी रिटटा ओके तो से मना कर परिबेनी कि ना हमें ताको ओके एग्जामिन करिवनु तो एग्जामिन करिया पई मना कर परिबे से एग्जामिन करिवे जदि सेतरे कोनोसी से देखिले कि नहीं फंडामेंटल राइट वायलेट हेनी तापर से डिसमिस कर दे पारन बट they will have to examine. Okay. A remedy under Article 226 is discretionary and hence the High Court may refuse to exercise its writ. Okay. So, Article 226 from High Court's writ jurisdiction is we have studied that writ power পর্যন্ত পাঠানো সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট নেই কিন্তু এটা কমপ্লিটলি পার্লামেন্টের পাওয়ার তো যদি কালিকে চাইবো সেটা ডিসকাস করতে দিতে পারে ওর করতে দিতে পারে কমপ্লিটলি ওকে কাজ থেকে রাইটটা দো এ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট দেয় সুপ্রিম কোর্ট তার জুরিসডিকশনটা আছে যদি ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেট হচ্ছে তাহলে আপন যাচ্ছেন আর্টিকেল 32 আন্ডার কিন্তু under Article 226 not only on violation of fundamental rights but also on violation of general legal rights also you can do the okay so the second statement is a remedy under Article 226 is discretionary. Why discretionary? Because apart from fundamental rights legal rights are also there. So upon legal rights ଆପଣଙ୍କର violate ହେଇଛି ଆପଣ ପୁରା writ ଆପଣ file करते ठीक ଅଛି so a high court may refuse to exercise this jurisdiction. तो सेठी कोर्ट कहबो कि नहीं writ jurisdiction द कांसेप्ट बुझछन तो writ माने कोन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉर्मल to the severity of the matter in question एठी आपण गोटे डायरेक्ट अप्रोच नउचंती बायपास कर दउचंती से थ्रू द प्रॉपर चैनल को ओके सेटा हला writ jurisdiction और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपोर्टेंस अछि सेते पई ए jurisdiction ता दिया ओके जदि हाईकोर्ट को लगिला नहीं आपण एटा एते इंपोर्टेंट नुह आपण ए जो थ्रू द प्रॉपर चैनल आसीबा कथा तो से डिसमिस करिकि केसटा आपण कहबे पण प्रॉपर चैनल को आसन ओके so both of these statements are correct okay both one are correct now the explanation that more than the component is this jurisdiction of Supreme Court. It means the fundamental rights of the citizen are violated. The acting that has party has the option of making request to High Court. However, High Court is wider than Supreme Court. This is because Supreme Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights and not for any other purpose. That is, if it does not extend to a case where breach of ordinary legal right is alleged. जोटा कि High Court करि परिबो. Writ माने हला basically it means an extraordinary jurisdiction. ठीक अछि तो. कि गोटे extraordinary remedy. Okay, writ हला extraordinary remedy. ओके कौन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी बेसिकली हमर गोटे रेमेडी जोटा हमें फर्स्ट देखिथिलु जेतेबेले हमें आर्टिकल 32 को आसीथिलु कोन आई टोल्ड यू मैक्सिम ओके यूबिजस इपी रेमेडियम राइट एटा हमें डिस्कस करथिलु यूबिजस इपी रेमेडियम एटा मेंस में इंपोर्टेंट एटा कारण फंडामेंटल राइट्स ऊपर तो जहां देले गोटे क्वेश्चन पड़ियो मेंस रे ए मैक्सिम टा हमें दे परिया ओके Ubiquitous remedium means where there is a right, there is a remedy. Or in other words, a right without a remedy is no right. आपको यदि जो अधिकार दिया है अधिकार यदि भंग होची ताले सेटा केमिति आपण ताको एनफोर्स करिवे आपनको पाखरे बाट कोन अछि तापर सेटा भी क्लियरली आपण देखिराबा यदि सेटा दिया होनी ओके ताहले रेमेडीटा दिया होनी राइट रो वायलेशन हेले कोन कराबो ताहले से राइट रो कोनस माने नै से जिंसटा हम देखि नॉर्मली कौन हुए आमर जो गोटे प्रोब्लेम हो गोटे राइट भांगा हो कौन आम गोटे प्रोसेस रे जाऊँ ओके जमी आम से स्कूल रो एग्जांपल नहीं क्लास रे पिला माने खेलुचंती तो दीटा पिला भीतर झगड़ा हो गला ओके किए क्या गोटे पड़े देला चार पिलाटा से कौन फर्स्ट मॉनिटर को कहूँ क्लास टीचर को कहूँ ठीक अच्छे तापरे वाइस प्रिंसिपल तापरे प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी किसी न कले से स्कूल रो मैनेजिंग ट्रस्टीज जो मैंने कहूँ ओके किंतु लेट से गोटे कि गोटे जने देखला कि गोटे स्कूल को बंदूक नहीं आस गोटे पिलाटे तो इमिडिएटली से जाकि प्रिंसिपल को कहूँ से
थ्रू द प्रॉपर चैनल जीवा दरकार नहीं कारण सेटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसटा ओके रेमेडी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप रो दरकार तेणु सेटा हला व्रिट माने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी जोटा से नॉर्मल प्रोसेस को बायपास करके ड्यू टू द इंपोर्टेंस ऑफ द मैटर आपण ओके सेटा जाईकी हायर अथॉरिटी को डायरेक्टली पहुंचन ओके सेटा हला व्रिट जुरिस्डिक्शन नॉर्मली कौन हुए ना हम थ्रू दी प्रॉपर चैनल आसु नॉर्मल केसेस रे व्रिट्स रे ओके सेटा बेसिकली लागिला कि मैटर सेटा मेन राइट पापा बाईपास तो now the business management cannot be against the private individual. That does not so that does not possess statistics. थ्रू दिया ही नहीं ऑफिस ऑर्डर केमती डिपार्टमेंटल ऑर्डर गोटे ହେଇଛି ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି when the duty when the duty ତ ଆମେ ଅଲରେଡି ସେଟା ଦେଖିଛୁ କି ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଟା କେତେବେଳେ ଇସ୍ୟୁ କରାହବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଥରିଟି ତା ନିଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କାମଟା ଅବ୍ଲିଗେଟରୀ କାମଟା କରୁନି ଓକେ ଯଦି ସେ ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ କାମ କରୁନି ତାହେଲେ ସେଇଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିହବନି ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ କହିହବନି ତୁମେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କ ସମୟ ଅଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଯଦି ସେ କରିଦେଲେ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ହେଲା ଡିସ୍କ୍ରିସନାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହି ହାଜ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଟ୍ ତା ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିହବ ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କୋଉଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିହବନି ତ when the duty is mandatory ତ ଏଟା ଭୁଲ when the duty is mandatory it can be ଓକେ ତ 1 ଟା ହବ ଆଉ 2 ଟା ହବ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କି ଆମର କଣ ପଚାରୁଛି ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ୟେସ୍ नो ନଟ୍ करेक्ट ओके इनकरेक्ट ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦଉ କେବେ କେବେ କଣ ହୁଏ ନା क्वेश्चन पेपर रे लिखा ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ କିନ୍ତୁ ପଢିବୁ ଯାହା ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଓକେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ ଅଲଦୋ ମୋ ନଲେଜ ବେସ୍ ଟା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆନ୍ସର ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଓକେ ତ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି କି ଆମର ବାକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କଣ କଣ ତାର ଏକ୍ସେପସନ୍ସ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି ଓକେ so the writ of mandamus cannot be issued against a private individual or body okay to enforce departmental instructions that does not possess statutory force when the duty is discretionary and not mandatory to enforce a contractual obligation the contract रे किसी ओडा लिखा है कि ताकू enforce करे पे mandamus करियो against the president of India or state governors तांको against the mandamus of writ courts issue करि परिबेनी
against the Chief Justice of High Court acting in judicial capacity. So if it is in administrative capacity ताहले ही परिबो judicial capacity रे ही परिबो जेतोले से adjudication करछन्ती गोटे केस रो in a judicial capacity so same time the Chief Justice of the High Court acting in judicial capacity mandamus cannot be issued against him. Okay, so এটা মনে রাখবে তার যে various different okay exceptions সেটা মাইন্ডে রাখিবার আছে কিছু ডাউট আছে এতে you can ask. Come to question number 6. Consider the following statements about quo warranto. Okay, through what authority or through what warrant? The writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution. That is correct. It a temporary offices fine. Okay, किंबा जोड़ा non substantive office उड़ा ठीक अछि जोड़ारे continuation नहीं ad hoc post अछि सेगुड़ा ପାଇଁ क्यू वारंटो रो writ टा applicable हबनी तेणु substantive public office थिबो number 1 second permanent character थिबो okay and से जो post टा it should have been created either by by the constitution itself or by any law किसी statute रू सेटा हेतिबा दरकार बुझि पाले. So let us now go to this. So one is correct. Second, it cannot be issued in cases of ministerial offices or private offices. एटा भी ठीक अछि सेटा ministerial office की private office रे हमें ताकू यूज करि परिबा नाही. Okay, जदि the post is of a ministerial or private in nature. Okay, ताहले this writ cannot be issued. So that is also correct. So both of these are correct. The writ can be issued only in case of substantive public office of a permanent character created by a statute, one a law or by the constitution. It cannot be issued in cases of ministerial offices or private office. Okay, so both of these are correct. Now you come to the next question, question 7. The concept of martial law has been borrowed in India from the English common law. Okay, the military rule jota मैं देखुथिलु so that has been the expression martial law means military rule and it has been defined in the constitution. The expression martial law means military rule because and it has been defined in the constitution that part. Okay. And a constitution has been defined in the martial law. Only one is correct. Okay. So A is the correct answer. Let us see the explanation. The concept of martial law has been borrowed in India from English common law. However, the expression martial law has not been defined anywhere in the constitution. It means military it refers to a situation that civil administration is done by military authorities according to their own rules and regulations framed outside the ordinary law. It thus implies the suspension of ordinary law and the government by military tribunals. Okay, it is different from military law that applies to the armed forces. So it ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ମାର୍ଶଲ ଲ କେବେ ବି ଆମର ତାଜ ମଧ୍ୟ ହେଇନି କେବେ ତ ଯଦି କେବେ ବି ଗୋଟେ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ସିଭିଲିୟନ ଲ ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ସିଭିଲିୟନ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଲାଇଫ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଯେମିତି ଆମର ଆର୍ମି ଆକ୍ଟ ଅଛି ନେଭି ଆକ୍ଟ ଅଛି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ସେଗୁଡା ସେଇ ଆକ୍ଟ ଗୁଡା okay that is not martial law right so ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆର୍ମି the personnel and officers of army ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଓକେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲସ୍ ଲାଗୁ ହବ ସେଗୁଡା ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖଉଛି ଓକେ ବଟ୍ ଏଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ସେ କହୁଛି it refers to a situation where civil administration is run by military authorities okay so
military authorities, military tribunals ସେମାନେ day to day life okay civil administration ର କାମଟା ସେମାନେ କରିବେ ସେଟା martial law ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ବି ହେଇନି ଆଉ ଆମର neighbor that is Pakistan ତାଙ୍କର ଏଟା ବହୁତ common okay martial law is very common there right. Now come to question number 8. The power to make laws and to give effect to a certain specified fundamental right is vested on which of these? Eta hala last article of part 3 article 35 रे कहउची कोन ना only parliament को से right टा दियाइची okay to make certain laws which will give effect to certain specified fundamental rights. Article 35 कहउची only parliament okay so A will be the answer. And Article 35 lays down that power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in parliament and not in the state legislatures. This provision ensures that there is uniformity throughout India about nature of those fundamental rights and punishment for their infringement. नहले स्टेट कले कोन ना सेमाने तांकर अलगा अलगा सब व्यवस्था करिवे को स्टेट से सब अलगा अलगा तांकर निज लॉज बनेबे सेति पई एंटायर देश रे यूनिफॉर्मिटी हो पई द only parliament has been given that right okay to make laws related to certain fundamental rights. Now coming to question 9 sorry. The article of Constitution of India safeguards one's right to marry okay the person of one's choice. तो एटा में देखिलु कोन हमरो excuse me तो आर्टिकल 19 21 25 की 29 सो आर्टिकल 21 रे हमरो बहुत गुडे राइट्स अछि ता भितरु राइट टू मैरी वंस ओके पर्सन ऑफ वंस चॉइस दैट इज अ राइट व्हिच इज गिवन टू राइट अंडर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 अंडर रे सेटा रहउची ओके एठी एक्सप्लेनेशन रे हदिया केस ता देछि ओके बट बहुत आगुरु सुप्रीम कोर्ट एटा मेंशन करिसेंती हदिया केस रे आउथरे कहिले ओके हदिया केस टा कोन जानछन केरला रो गोटे केस सेटा जोन जान नांती ताको शॉर्ट रे कहि दउची तो एटा गोटे इंटरफेथ मैरिज रो केस हदिया बेसिकली शी वाज अ हिंदू गर्ल आउ से गोटे मुस्लिम लोगों को भाइले ओके तो भाई की से तांकर निज इच्छा रे भाई जंती से जान तांकर हस्बैंड को पाखे रहले ताको पेरेंट्स जे से सुप्रीम कोर्ट आसी फर्स्ट केरला हाई कोर्ट गले तापर सुप्रीम कोर्ट को आसी से गोटे हिबियस कॉर्पस रो रिट फाइल कले कि मो झियो पळी चेंती औ से यू नो ताको एज ऊपर भी गोटे टसल थिला कि से माइनर कि मेजर तो एनीवेज तापरे सुप्रीम कोर्ट कहले कोठी अछंती पहिले केरला स्टेट रो ताको पुलिस को ताको नै कि आसो से जतरे कोर्ट रे कहले निजे कि ना मु निजे इच्छा रे भाईची सो कोर्ट सेठी कहला कि सेटा तांकर पेरेंट्स करो जहा भी यू नो प्रॉब्लम सेटा अलग था बट एज द राइट ऑफ दिस पर्सन ओके ऑफ हदिया तो शी हैज फुल राइट ओके टू डिसाइड whom to marry तो सेही हिसाब रे से कहिची कि the Supreme Court judgment in the Hadia case, okay, there is a coach right to marry a person of one's choice in integral to Article 21. But this is not the first case in which Supreme Court has said it. सेटा भी मान रखिबे आगुरु भी बहुत केसेस हिची जोतरे Supreme Court सेम जिनसटा कहिसन. Okay, so that is B Article 21. Now come to question number 10. Which among the following is not a fundamental right under the Constitution of India? So very direct question. Okay, right to equality, ठीक अछि, right to freedom. Okay, now this right to freedom ताको हमें consider करिया कि right to freedom of speech, expression, whatever. So right to freedom, right to citizenship, right against exploitation. तो citizenship टा इनते गोटे birth right नु ठीक अछि किछि कंडीशंस अछि हमें जोड़ा देखिथिलु just solely और just sanguineous. Okay, केमती हमें इंडिया from the concept of just solely हमें आस्ते आस्ते move on करि गलु to just sanguineous. Okay, so basically right against exploitation, right to freedom, right to equality हमर अछि, citizenship टा गोटे fundamental right नु. Okay, so C is the answer. According to Indian Constitution, there are 6 fundamental rights of Indian citizens, which are एटा खाली एटा जो कहला Indian citizens एटा भी ठीक नु केते गुडे राइट हमें देखिलु सेटा नॉन सिटीजन्स को भी हमें दउछु आर्टिकल 21 फॉर एग्जांपल. Okay, and other rights also are given to non citizens, right, aliens मान को दिया होची. तेनु
बट आम सिटीजन्स को बेसिकली 6टा सिटीजन्स को तो सब राइट अच्छी फंडामेंटल राइट्स एते कौन कौन से गोटा राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स right to freedom right to constitutional remedies and right against exploitation right to citizenship is not a fundamental right okay then we come to question 11 which of the following would be constituted as a reasonable restriction of the right to freedom right to freedom absolute नुह कौन सी right भी absolute नुह सबु थरे reasonable restriction अच्छी जो थरे कि आम से our fundamental rights are different from the rights given in the US जहाँ करो कि more or less सेटा absolute okay आमर फर्स्ट अमेंडमेंट आमर फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज कला ठीक अछि कि ताको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन एडा सब मिसेला तांकर फर्स्ट अमेंडमेंट सेठी कोन कला यूएस रे कि स्टेट शैल नॉट एब्रिज ओके और टेक अवे राइट्स तो सेठी राइट्स उडा प्राय आपण कहि परिबे एब्सोल्यूट राइट्स आमर जोठी कि एठी आमर क्वालिफाइड राइट्स फंडामेंटल राइट्स ओके which of the following would be constituted as a reasonable restriction of right to freedom प्रथम हैला when the state disallows a candidate from securing votes in the name of religion okay एटा हमें आरपीए पढ़िबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेतरे क्लियरली आइछि गोटे एमती गोटे जदि आपण मु एबे कहबी मु गोटे गोटे पार्टी करिबी ता ना दे देबी हिंदू पार्टी की कोन आरो सुप्रीम कोर्ट केसेस भी अछि एतले हिंदू महासभा तले से इलेक्शंस लड़िले एंड ऑल दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमर एआईएमआईएम अछि सो गोटे रिलीजन रो ना जदि गोटे पॉलिटिकल पार्टी रे रहउची सेटा को केसेस रे एक्सेप्टेबल बट जदि आपण रिलीजन को नै की भोट मागुचंती ताहले आपण डिस्क्वालिफाई भी हे जाय परिबे इलेक्शन कमिशन कर दे परिबो सो सेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेटा दे आइछि व्हिच वी विल स्टडी लेटर okay so a is correct which of the state when the state disallows citizens from forming a club out of state funds that denies access to women ठीक अछि so you are denying access to women माने से क्लब रे आस परिबेन ओके आउ सेटा स्टेट फंडिंग रे हिच ठीक अछि स्टेट फंड प्राइवेट क्लब गोटे था गोटे मेंस क्लब की गोटे कर दला ओके प्राइवेट मनी प्राइवेट लैंड ताले अलगा कथा तथापि तार रिपोजिशन ठीक अछि तो इवन जदि प्राइवेट भी होची इट कैन बी टेकन टू कोर्ट बट एनीवे सेटा कोर्ट देखि होगी किंतु जदि स्टेट फंडिंग रे होची आउ वुमेन को अलाउ करा होनी तो सेठी ओके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन राइट टू फ्रीडम ऊपर लगे परिबो कोर्ट ओके नेक्स्ट when the government of Nagaland disallows temporary residents to buy immovable property in Nagaland. तो हमें जानते ट्राइबल एरियाज एंड सर्टेन एरियाज जो कि लाइक नॉर्थ ईस्ट से बहुत जगह में इनर लाइन परमिट कथा डिस्कस करथुलु ओके आर्टिकल 19 जोटा कि इंटरनल फ्रीडम पे हमको राइट दोची फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सेथरे हमें देश सारा जोठी भी बुझ पारी कि किसी जगह अछि क्योंकि हमको परमिशन नहीं दिया पर सेठी हमें रही परिबन तो तो हमें रिसाइड ऑफ सेटल आर्टिकल 1900 जो इंटरनल मूवमेंट पे फ्रीडम दिया है सेथरे दिस inner line permit and certain areas are there where you have to take permission before going ठीक है जी so when the government of Nagaland disallows temporary residents to buy immovable property in Nagaland this is also correct so all are correct D will be the answer okay or answer D hobo so all the three statements are correct you can see article 19 of the constitution now provides 6 freedoms aguru kon सातटा थिला right to property टा भी थिला सात थिला okay the right to freedom of speech and expression right to assemble peacefully without arms right to form associations or unions right to move freely throughout the territory of India right to reside and settle in any part of territory of India right to practice any profession or carry out occupation or business restrictions defamation contempt of court decency or morality security of state friendly relation with other state incitement of offense and sovereignty and integrity of India right so it are basically 6 freedoms or 7 thila 6 freedoms abe achi right to property ta padai so ei case re all the three of the above re reasonable restriction court dei pari okay so ei question ta bhalre bujhantu eta ଟିକେ technical question hobi ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ question of ଜାଣିବା ଯେ in which of the following cases did Supreme Court ruled or ଏଥିରେ ଗୋଟେ error ବି ଅଛି ଯୋଉଟା if you can tell me what is the error ତ ଭଲ କଥା otherwise I will tell you in which of the following cases did the Supreme Court rule that
constitutional amendments were also laws under Article 13 of the Constitution, which could be declared void for being inconsistent with fundamental rights. Okay. No, ମାନେ ସେଇଟା normally କଣ ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ article ଅଛି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର constitutional amendments ଠିକ ଅଛି ସେଥିରେ article 13 under ରେ ଆସିବନି ଠିକ ଅଛି ତ କୋଉ କେସ ରେ କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଆସିବ there are also laws under article 13 of the constitution okay and article 13 कौन कौन any law or any order okay any bylaw anything even official orders and all any statute which is against the part 3 of the constitution is null and void ab initio सेटा से कुछ ना तो से हिसाब रे हमरो ओके आर्टिकल 13 अंडर रे जदि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा होची सेटा आर्टिकल 13 ओके अंडर रे जीवो आ सेटा जदि वायलेट करूची फंडामेंटल राइट्स को ठीक अछि तो इट कैन बी स्ट्रक डाउन राइट एटा से को थरे कहितले एठी आंसर देची मेनका गांधी केस दैट इज रॉन्ग मेनका गांधी केस रा आरोप एटा हला गोलकनाथ केस ओके गोलकनाथ केस एटा कहैतला एक्सप्लेनेशन रे देची किंतु आंसर भूल देची कोन एटा बा नन ऑफ द थ्री ना केशवानंद भारती रे रादर कहला कि हबनी ओके नॉट इट इज नॉट ओके यू नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा सेटा आर्टिकल 13 ओके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमर यस सेटा केशवानंद भारती केस रे कहला सेटा आज पर्यंत कंटिन्यू होची सो हियर चेंज इट आंसर ता देखंतु आंसर विल बी द गोलकनाथ सो नन ऑफ दिस अब गोलकनाथ केस एक्सप्लेनेशन ठीक देती बट एठी जोटा आपन आंसर ता देती ओके सो बी टा जो आंसर देची इट इज रॉन्ग बी इज नॉट द आंसर मेनका गांधी केस नो एटा हला गोलकनाथ तो तार टिके okay so D hobo a case re D will be the answer okay for this question now if you go to the uh, explanation of that को case रे कोन कोन करितला सुप्रीम कोर्ट सेटा टिके देखंतु फर्स्ट आसिला आपनकर शंकरी प्रसाद ओके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा जो एआईआर कोन सो लिखि जेटा मु कहितल सेतना आउथरे बुझौची एआईआर माने सेटा गोटे जर्नल रो ना ऑल इंडिया रिपोर्टर ओके लीगल जर्नल रो ना ऑल इंडिया रिपोर्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 माने ऑल इंडिया रिपोर्टर रो 1951 सीरीज रे ओके 1951 एससी केना से हाई कोर्ट सो भी थिबो एससी माने सुप्रीम कोर्ट रो तापर पेज नंबर देला 458 okay so supreme court held that meaning of law under article 13 does not include a constitutional amendment okay so constitutional amendment cannot be challenged under article 13 eta shankari prasad case se kuala golaknath case se eta change kara hai okay so in this supreme court held that power of judicial review is supreme even amendments can be challenged under okay article 13 so constitutional amendment can be challenged okay that it violates part 3 okay tapare 24th constitutional amendment asila it inserted article 13 okay clause 4 in the constitution which said constitutional amendment made under article 360 cannot be challenged okay tapare our जो 24th constitutional amendment ro validity whether it is constitutionally valid सेटा को देखिया पे पुनी केसेस हला तापर फाइनली केशवानंद भारती रे it was said that constitutional amendments cannot be challenged okay under article 13 right so जो केस रे अभी तो एग्जांपल्स जो केसेस रो देची सेतर खाली गोलकनाथ केस रे ही सुप्रीम कोर्ट कहले कि इट ओके कैन बी चैलेंज्ड अमेंडमेंट्स ओके सेटा आर्टिकल 13 अंडर रे चैलेंज करी हबो ओके तो चेंज द आंसर तो सेतरे भूल देची आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 এই টাইপ ର आर्टिकल्स रो टिके डिटेल्स रे बुझिया पे चेष्टा करिवे ए जो तार निटिग्रिटी उडा ए टाइप रो क्वेश्चन हमर आसी पारे नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन 13 the right conferred on minorities under article 30 is only to ensure equality with the majority and not intended to place the minorities in a more advantageous position okay via with the majority that is true हमें देखियो ना गोटे सेम पोजीशन को आनिया पे ताको किछ गोटे एक्स्ट्रा
गोटे अपर हैंड दवा पई सेटा इंटेंशन नुह कॉन्स्टिट्यूशन रो दैट इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज सेटा भी ठीक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किछ नहीं ओके इन फेवर ऑफ द माइनॉरिटी सो बोथ आर करेक्ट सी इज द आंसर ठीक है ओके नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 consider the following statements fundamental rights are not permanent okay they can be curtailed and repealed by the parliament by an ordinary act okay so which of these are correct fundamental rights are not permanent I mean actually they are neither sacrosanct they are not permanent they can be changed but the change ta kemti hobo without affecting the basic structure of the constitution okay they can be curtailed and repealed by parliament by an ordinary act so that is wrong जदि आपन फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करिवार अछि कि रिपील करिवार अछि ताले आपन को कोन करिया पड़िबो यू हैव टू हैव ए ओके constitutional amendment आपन करिया पड़िबो so only one is correct so b the correct answer they are not sacrosanct or permanent sacrosanct माने कोन होली छुई हबनी जोटा ठीक अछि बेदर गार जेंते हम कहू ना ओडिया रे तो सेटा सेमति sacrosanct नो they can be changed ताको बेटर करी हबो the parliament can curtail or repeal them but only by constitutional amendment act and not by any ordinary act however this can be done without affecting the basic structure of the constitution basic structure of the constitution जोटा कि गोटे judicially किबा judge made principle judgment doctrine ए केशवानंद भारती केस रो ओके ताकू न चेंज करिके आपण कर परिबे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन 15 the rule of equality of law does not apply on whom president of india governor of state members of legislature all of the above it actually question टा टिके ये वाला फॉर्म है कि रूल ऑफ लॉ समस्त ऊपर अप्लाई होबे एती कथा कि किछड़ा प्रिविलेज सब एक्सेप्शंस ताको दिया होची ओके सो ऑल ऑफ दिस समस्त को एक्सेप्शंस दिया होची ओके प्रेसिडेंट गवर्नर member of legislature समस्त article 14 says that states shall not deny any person equality before law or equal protection of laws within the territory of india however there are few exceptions kon the president or governor is not answerable to any court for the exercise and performance of powers and duties of his office members of legislature of a state are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by them in legislature or any committee thereof this law is applicable to all citizens and foreigners okay article 14 consider the following statements regarding article 19 of the constitution article 19 guarantees all citizens the sixth right सातटा राइट थिला गुड छटा राइट हे गला राइट टू प्रॉपर्टी गला right to property is part of article 19 so the first one is correct second one is not correct right to property above nahi article 19 ro part aguru thila 19 au article 31 ro thila right to property was deleted by the 42nd amendment act of 1976 44th amendment act okay so only one is correct so a that is the correct answer right to property was deleted by the 44th amendment act and it is also right to property is not a part of article 19 anymore next question 17 consider the following statements american constitution provides for due process of law तो आमे तो बिल ऑफ राइट्स केना आमे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 टा सुठु आनी छ ताको कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स रु ताको सेटे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थिला सेते आमे ताको सब्स्टिट्यूट करलु ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ American constitution provides for due process of law procedure established by law is contained in Indian constitution okay जोटा कि आमे तार आनिचु कोठु ब्रिटिश constitution किंतु तार एक्चुअल सोर्स ता कोन सेना में डिस्कस करथु प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोठु आछि सेटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आमे नहीं छु ब्रिटिश constitution but that is not the mother source british constitution रो सेटा स्टार्ट हे नटला ओके सोर्सेस ऑफ द constitution को जानतु से चैप्टर रे सेटा देखंतु ओके प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कोठु आमे आनिछु जापानीज constitution देखिबे सेटा ओके दैट मींस इट originated from there okay देखिबे सेटा just check it whether it is correct or not right so एथरा कोन होची American constitution provides for due process of law is correct procedure established by law is contained in Indian constitution okay that is correct right so composition which of the statements are not correct so both are correct okay
So neither one nor two. Okay, so both are not correct. So quota false, quota incorrect. So dita correct ଅଛି, so neither one nor two. D. The scope of judicial review in India is narrower than what exists in USA. So the American Constitution does not explicitly mention the concept of judicial review in any of its provision. This is because American Constitution provides for due process of law against against that of procedure established by law, which was contained in Indian Constitution. तो जेतेबेले Bill of Rights को हमें adopt कलु American Bill of Rights को हमरो part 3 हिसाब रे तो सेथरे थिला सेटा due process of law तो हमें ताको replace कर देलु. The words due process of law were replaced by the words procedure established by law. Thus, Article 21 of the Indian Constitution now reads, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. किंतु तारो जदि evolution टा देखिबा जोडा हम डिस्कस करथिलु क्लास रे कि judicially it is now being interpreted okay slowly हमें due process of law को पळेलुनी. Okay, so मेनका गांधी केस रु एंड ता परे परे जते सब केसेस भी अछि सेतु हमें due process of law को पळेलुनी. Procedure established by law रे खाली को होची जदि अपन पार्लियामेंट की लेजिस्लेचर ठीक भाबरे ठीक प्रोसेस रे गोटे लॉ टे पास कर दोची तारे से लॉ रे जा लेखा हिची सेटा इंप्लीमेंट हबो. से लॉ टा नेचुरल जस्टिस को मानुची कि नहीं, इज इट फेयर टू ऑल, सेतरे किछि बायस अछि कि नहीं सेटा देखा जाउनी. ओके, सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे कोन कहउची कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ सेटा तो रहइबो प्लस द लॉ हैज टू बी फेयर एंड इट हैज टू हैव द टेंडेंसी ऑफ नेचुरल जस्टिस. ओके, एति की हेले सेटा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ओके कन्फर्म करिवो. आम जुडिशियरी एबे स्पेशली हायर कोर्ट्स से माने से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा को देखुछन. तेनु काली की जदी पार्लियामेंट ओके किंबा आपनकर कोनोसी स्टेट लेजिस्लेचर ओके किछि गोटे एमती लॉ पास करिवो जोडा की प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट रे हिजे ठीक रे ताको पास करचंदी किंतु से तार कंटेंट उडा सेगुडा सेतरे बायस अछि अगेंस्ट ए कम्युनिटी और अगेंस्ट ए पर्सन अगेंस्ट ए कंपनी ओके ताहले ताको सुप्रीम कोर्ट null and void कर देता है. ठीक है, so सेटा हला क्वेश्चन नंबर 18. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 17 गला कम टू क्वेश्चन नंबर 18. एटा फैक्चुअल क्वेश्चन टा. Who was appointed as chairman of 6-member Administrative Reforms Commission in 1966? This was Morarji Desai, 6-member Administrative Reforms Commission. Okay, in 1966 under the chairmanship of Morarji Desai and followed by तांको परे के Hanumanthaya was appointed by the central government. It was to examine the various issues in center-state relation. It is the first ARC gala. Second ARC जोटा तारो किए थिले chairman. Anyone who can tell me? Public ad पिला जे अछंती. Normally तो तारो केते गुडे जिंसो हम पढुचु. Okay, बहुत important reports से सब देइची. Second ARC के anyone who can tell me? से जो भद्र लोक जे थिले ओके तांको तांको राज्य रे तांको गोटे सबु राज्य रे पॉलिटिशियंस मानको गोटे किछि ना दिया हुए तांको ना दिया हिची तांकर राज्य रे ऑयली ओके ऑयली माने कोन तेल लागिथो जे हां एनीवन हु कैन से चेक वेदर ही इज वीरप्पा मोइली. ओके, वीरप्पा मोइली बुझि पाले देखि बेटा सेकंड एआरसी कथा कुछ. Now come to question number 19. According to Article 12, which of the following can be termed as a state? So Article 12 रे हम state रो definition देखथिलु. Okay, so आ भितर कोटा state रे जीवो statutory bodies, yes, non statutory bodies जीवो, improvement trust and district boards, all of them will be included. Okay, so all of these are there. Even हमें देखथिलु private bodies which are involved in execution of public policy से माने भी state रो definition रे जीवे. Okay, तो तार details टा देइची, you can just go through that. News channel fourth आपनकर जोटा fourth pillar of the constitution, whether they are implementing public policy, public money ताको दिया होची. Contractor गोटे road बनौची government ପାଇଁ, government करूनी, government रो manpower नहीं, से contractor को दे देला. सी जो पैसा खर्च कला सेटा public money. ओके, मु गोटे प्राइवेट न्यूज चैनल खोलली, मोर जहा इच्छा आडू मु कहली, गवर्नमेंट मते बैन कर देला. आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ द स्टेट, मु स्टेट रो पॉलिसी फर्दर करली, मो निज एजेंडा थिबो कि कोन थिबो जाबी. ओके, बट दूरदर्शन सेटा स्टेट. ओके, काहे कि ना से पब्लिक फंड्स यूज करची, सेटा पब्लिक माने गवर्नमेंट रो ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी. ओके, सेटा हबो, बट स्टार न्यूज विल नॉट बी
एग्जांपल ऑफ स्टेट ठीक अछि ना ही से स्टेट रू फंड्स पाउची जदि स्टेट रू फंड्स पाउची स्टेट फंडिंग जदि अछि टैक्स पेयर मनी यूज करछि ताले सेटा स्टेट रो डेफिनेशन छि ओके सी कंप्लीटली प्राइवेट एंटिटी जे सेटा किछि ओके आउ सेटा हला कोन फंड्स सेटा गोटे जिंस नॉट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट लेट्स से गवर्नमेंट तार गोटे गोटे एडवर्टाइजमेंट एबे बाहर कला सब न्यूज़ चैनल पैसा तो एडवर्टाइजमेंट पे कला न्यूज़ चैनल को कि न्यूज़ पेपर को सेटा स्टेट भीतर पड़िबन सेटा एडवर्टाइजमेंट गोटे सर्विस गवर्नमेंट चाहूची तांकोटू सर्विस का नेला पैसा देला कुछ पाले तो सेटा माने हमें कंपेयर कर सकते ठीक है ओके तो लास्ट लाइन जो लिखी जी इवन ए प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट falls within the meaning of okay the state under article 12 next last question which of the following element apply to the Indian constitution absence of arbitrary power ठीक अछि हमर arbitrary power नहीं ठीक अछि माने समस्त को सेम लॉ समस्त ऊपर एप्लीकेबल हो arbitrary power एग्जांपल क्लास लेजिस्लेशन जोड़ा देखिबलो हम फ्रेंड सोसाइटी different classes by different courts different rules equality before law that is there अच्छे हमर constitution is the result of rights of individual as defined and enforced by courts of law एटा जब मन रखिया हमें कहितलु हमर जो right to equality article 14 में एवी डाइसिंग को रूल ऑफ लॉ पढितलु रूल ऑफ लॉ रे हमें तीनटा तांकर एलिमेंट्स पढितलु थर्ड एलिमेंट रे हमें देखिलु कि इंडिविजुअल राइट्स ता ओके ताको प्रायोरिटी बेसी दिया होची आउ से इंडिविजुअल राइट्स ता हला it is due to okay the decisions of the court not because of the constitution तो सेटा हमें मानलुनी हमर एठी इंडिविजुअल राइट्स जहा मिलिची आपन को फंडामेंटल राइट्स जहा मिलिची सेटा कॉन्स्टिट्यूशन आपन को दोची कोनसी कोर्ट दोनी ओके यार मेन डिफरेंस कोन हला कि तांकर जेतु ओके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं यूके रो दैट इज वन रीजन से माने सेमति ताको रखिसंती सेकंड आ जेतु एई पार्ट में आनिचु कोटू यूएस रे कोन सेटी जुडिशियल सुप्रीमेसी एबे धरंतु कोन हिची सेठी चलची आपण जानचंती तांकर सुप्रीम कोर्ट सेठी 6 जण जज तांकर ओके से हम कोन जानछु हम डिस्कस करथुलु यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियरी सुप्रीम तांकर जज माने चाहिले सुप्रीम कोर्ट रो फेडरल सुप्रीम कोर्ट जज माने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे तांको पाखे सेठी पावर अछि ओके एबे तांकर सेठी जो तांकर कंपोजिशन अबे अछि 6 जण जज तांकर से माने कंजर्वेटिव ओके कंजर्वेटिव माने कोन कि ट्रेडिशनल वैल्यूज से माने फॉलो करन अकॉर्डिंग टू मेनी रिलीजन स्पेशली अकॉर्डिंग टू मेनी अब्राहमिक रिलीजन abortion is against the fundamental principle of life काहे ना लाइफ ता भगवान दोछन गॉड गिव्स लाइफ so only god has the right to take the life तो मनीष जेतले डिसाइड करछि मु अबॉर्ट कर दी पिलाटाको सेमति बहुत कंट्रीज अछि धरंतु आपनकर आयरलैंड हला ठीक अछि मेनी कंट्रीज ओके जोठी ए लॉज रा अलाउड नाही माने under no circumstance abortion will be allowed okay even medical cases में कितने कंट्रीज अपन देखिबे किछु बता गयो आई थिंक आयरलैंड रे ଗୋଟେ इंडियन नेशनल को डेथ हे गला इंडियन लोकर तेना तांको देश रे सिटी अबॉर्शन अलाउ करूना तांको ଗୋଟେ मेडिकल कंडीशन थिला ओके तो तांकर सिटी हे पले एंड शी डाइड सो यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन फॉर इट्स ओपननेस ओके तार फ्रीडम जोटा से दे तांकर सिटीजन्स मानको तो एबे से तांको वुमेन मानकोटू से राइट्स ता नै जाइछ ओके सुप्रीम कोर्ट जतले कहिला तापर बहुत गुडे स्टेट संगे संग से माने ताकर हमें जो देखितलु हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रे ताकर जो नॉर्दर्न पार्ट ता ओके शिकागो एंड ऑल से माने टिके बेसी डेवलप ताकर हिस्ट्री ता भी सेमतिया से माने बेसी ओपन ओके आउ जो सदर्न पार्ट ता जो माने कि बेसिकली हमर मिसिसिपी एंड अदर सदर्न स्टेट्स करिका जोड़ा सेगुड़ा आगुरु से स्लेवरी करिका को से माने सपोर्ट करथिले दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन प्लांटेशन ओके तो निजे तो से व्हाइट लोग काम करिवे से स्लेव्स आनी से काम करूथिले ताको हिस्ट्री ता से हिसाब रहि अछि आउ सब जो सेग्रीगेशन लॉ जुड़ा प्राय सब सेपटे आपनकर ओके सदर्न पार्ट ऑफ यूएस रे थिला तो एनीवे तो काई कहले जिंसटा बिकॉज से माने जिंस सपोर्ट करूछन ताकर माने सुप्रीम कोर्ट कहू कहू ताकर केतेटा स्टेट्स रूल लॉ बनी सरलेन ताकर कि हमें अबॉर्शन राइट ता नै जाउछ okay so that is the reason takara city judiciary is very very strong judiciary jaha कहबो से हबो okay
इंडिया रे ना जुडिशियल सुप्रीमेसी अच्छी ना पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड ए फाइन बैलेंस बिटवीन दीज टू। ओके, नीदर आम यूएस रो मॉडल फॉलो करछु जोटा हला जुडिशियल सुप्रीमेसी रो, न यूके रो मॉडल जोटा कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रो। ओके, फुल्ली सोवरेन पार्लियामेंट ताको हिस्ट्री को नेकी से माने करछथि, राइट। सो एनीवे, तो थर्ड पॉइंट ऑफ डाइसी वी हैव नॉट एक्सेप्टेड। तो सेटा से देखि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल as defined and enforced by courts of law. That is wrong. Not by courts of law, but it has been guaranteed by the constitution itself in India. Okay, so 3 ta habani. Okay, 3 is wrong. And fourth, constitution is the source of our individual rights. That is correct. It is the constitution which is the source of individual rights, not the courts of law. Okay, so 1, 2 and 4, that will be the answer. 3 ta amar habani. So you can just go through that. Okay, dicing karo jo 3 ta elements. आउ थर्ड एलिमेंट टा आमे फॉलो करूनु हम। ओके, ओके, सो नाउ लेट अस गो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एई आ भीतर किछि जदि डाउट्स अछि देन यू कैन आस्क। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, ओके, आई विल हैव सम क्वेश्चंस हियर। ऑडियो रे इशू रहउछि। तो एई क्वेश्चन टा टिके भलरे डिस्कस करिवा। आराम रे देखंतु, आई विल गिव यू फुल 1-2 मिनिट्स। ओके, क्वेश्चन टा भलरे पढंतु। हमें आर्टिकल 31C बहुत भलरे डिस्कस करथिलु। से आर्टिकल 31C ऊपर क्वेश्चन टा अछि। Okay, Article 31C ऊपर ही क्वेश्चन टा अछि कोन, which of the following articles of the constitution are mentioned in Article 31C in the latest constitution of India? ठीक अछि, को आर्टिकल्स 31C रे मेंशन हेछि आ भितर? आर्टिकल 19, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39C एंड आर्टिकल 13। तो देखिए, सेति भाई ए क्वेश्चन रो गोटे जिंस हमें बहुत क्लियर होबा कोन ना, बेयर एक्ट ता पढिबा केते इंपोर्टेंट। से कोन कहिछि कि मेंशन कोटा हेछि आर्टिकल 31C रे। ठीक अछि, सो आर्टिकल 31C जोटा सेटा इंसर्ट हेतिला 1971 रे, 25th अमेंडमेंट रे हमरो। ओके, ताको हमें इंसर्ट कलु 1971 रे। जेतो इंसर्ट हैला सेतबेले से कहतिला कि ए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, कहना सेतबेले आर्टिकल 31 टा थिला व्हिच वाज राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो एगुडा ओवरराइड करा ही जे परिबो। Although these are fundamental rights, these 3 fundamental rights, Article 14, Article 19 or Article 31, can be overridden if a law is made, okay, to give effect to the provisions of 2 directive principles of state policy, जोटा Article 39B और C रे दिया हिच। कौन 39B और C रे कौन अछि हम देखतिलु कि रिसोर्सेस आपनकर जोड़ा अछि। ओके, सेडा कॉन्सेंट्रेट न हो जाओ गोटे जगह कि किछिटा कम्युनिटी रे कि किछिटा लोकन पाखरे रिसोर्सेस प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, आपनकर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो, तार भी कंसंट्रेशन न हो। वेल्थ ऑफ द नेशन शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन रीजन और वन ग्रुप और कम्युनिटी, सेमती न हो। ओके, एई सब जिंस अछि 39B और C रे। ओके, सिंपल वर्ड्स रे नेशनल वेल्थ टा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो इंक्लूडिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो सेठी से मेंशन करथिला। तापर जेतबे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आसिला, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, माने कोन कले कि सेही 39B और C को चेंज करिकी, ओके, वन और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रखिदेले, वन और ऑल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखिदेले। आगुरु खाली 39B और C थिला, सेटा ओवरराइड कर परिबो फंडामेंटल राइट्स की। किंतु जेतबेले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आसिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सेथरे ताको चेंज करा हेला। कोन चेंज करा हेला ना, इट कैन बी एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉट ओनली दीज टू, एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ता माने तो अर्थ है कि एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल
can override the fundamental rights. Okay, तो एटा सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देला मिनर्वा मिल्स केस रे. मिनर्वा मिल्स केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन कहला कि नहीं जहां आगुरु थिला 39B और 39C सेटा ठीक अछि किंतु सबु पई हे परिबन सबु फंडामेंटल राइट्स को एनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन ओवरराइड. ओके ताले तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वायलेटेड. सो सेटा हे परिबनी हां 39BC सेटा ठीक अछि. सो जो प्री 1976 ओके जेतले आपनकर 42nd अमेंडमेंट आस्थिला तो ता आगुरु जहा पोजीशन थिला एबे सेही पोजीशन ता कायम रहइबो. एटा मिनर्वा मिल्स केस रे कोया वाला. ओके सेम जिंसो पुनी नेक्स्ट ताको कहले वमन राव केस रे. वमन राव केस रे सुप्रीम कोर्ट सेम जिंसो कहले. ओके बट गोटे मजा कथा कौन है ऑल्दो एटा कुहा गला कि ओनली 39B और 39C रहइबो. ओके किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रो टेक्स्ट टा को चेंज करलेनी. तो आज पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन रो टेक्स्ट रे कोन अछि ए अछि कि ऑल और एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो 39B और 39C ऑल्दो लक्ष्मीकांत रे भी कहिछि प्लस तार इफेक्ट ता सेया किंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे ओके 31C रे 39BC मेंशनड नाही. सेहित पई इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू नो ओके कि आपनकर कोनटा बेयर एक्ट रे अछि. सो से दैट इज व्हाई बेयर एक्ट निहाती भाबरे पढिबार अछि. सो यू सी दिस इज द बेयर एक्ट 31C savings of law giving effect to certain directive principles. Notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to policy of state towards securing all or any of the principles laid in part 4. This has been struck down. देखिए तार जो तले जो देछि ओके फोर्थ रे देखंतु substituted by constitution 42nd amendment act 1976 section 4 the principles specified in clause B or C of article 39 with effect from 3/1/1977. Section 4 has been declared invalid by Supreme Court in Minerva Mills and others versus Union of India and others. Okay, in 1980. किंतु सेटा चेंज नहीं पड़ो. Okay, तेणु थोड़ा से फोर्थ भीतर से रखी चंदी दिस थिंग. Okay, एई जो पार्टटा it has not been changed. ये एबे भी एमती ही अछि. ना माने any all or any principles laid down in part 4. Okay, किंतु in effect सेटा only 39B and C. सेति पई बेयर एक्ट ता निहाती पढिबा दरकार. एई जिंसटा लक्ष्मीकांत सेटा मिस करिछ. ओके तेणु अपन जेबे भी पढ़िबे बेयर एक्ट ता धरिकी पढ़िबे एपटे टेक्स्ट बुक रु पढ़ले एपटे बेयर एक्ट ता देखि देबे. ओके बुझी पाले. सो तार हमें हिस्ट्री ता देखिलु. नाउ लेट अस गो टू दैट पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर पचारला which of the following articles in the constitution are mentioned in article 31C in the latest constitution of India. So हमें देखिलु को कोटा अछि देखंतु एटा article 13 से 31C रे कोन कोन आर्टिकल मेंशन हेछि. notwithstanding anything contained in article 13. article 13 की मेंशन कला ठीक अछि. तापर मेंशन कला article 14 और 19 आगुर एटी 31 भी थिला. तो कोन हैला ताले 13 14 and 19 ए तीनिटी आर्टिकल को से मेंशन करूछ. आमर पचारछि कोन तो 13 हबो 14 तो देनी 19 हबो माने 1 and 4 हबो. ठीक अछि किंतु आमर जो कोड्स वरिका देछि हमकु सेतरे 1 and 4 नाही. So none of these हबो. बुझिबल. हां बस सेटा प्रॉब्लम आपण लक्ष्मीकांत रो देखुछंती. ओके सेटा स्टैट्यूट नु सेही पॉइंट को ही प्रूव करिया पई मु कहली कि खाली टेक्स्ट बुक टा नुह एथरे बेयर एक्ट टा भी देखिया पई पड़ियो. ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन रे भी देइची तळे कि सेटा आपनकर सुप्रीम कोर्ट टा को नल एंड वॉइड कर सकचंती. ओके किंतु कोर्ट तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन बदल परियो ना. कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट. हम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो बदलनी. तेणु करेंट कॉन्स्टिट्यूशन रे लेखा से ही अछि all or any of the directive principles. Although the legal position policy before 1976 that means only 39B and C. Okay, so if in effect सेटा अछि ठीक
किंतु क्वेश्चन हैला व्हाट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन एया ही अछि सेटा चेंज हेनी पर्यंत ओके तेणु वमन राव केस रे भी कोर्ट से कहले ता पर जेते केसेस हिची सबुटी सुप्रीम कोर्ट से कहछन कि प्री 1976 जा सिचुएशन थिला जेतले सेटा इंक्लूड करा हला 1971 रे आर्टिकल 31 सी टा से पोजीशन ओके कायम रहइबो माने ओनली 39B and 39C कैन ओवरराइड आर्टिकल्स 14 and 19 ओनली ठीक अछि बुझि पाले तो सेति पई बेयर एक्ट टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो constitution.nic.in कि legislative.nic.in सेउटू डाउनलोड करिकि से पूरा जोटा लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टा सेटा सब बेले पाखरे रखथिबे जेतेबेले लक्ष्मीकांत किछु पढुचंती ता संगे टिके मैच कर दे केना लक्ष्मीकांत रे एक्जाक्टली सब जगह रे किछि इंपोर्टेंट जगह रे देछि किंतु सब जगह रे बेयर एक्ट कोन लेखाउ सेटा से दउनी ओके तेनो एटा गोटे बहुत भलो एग्जांपल सेथरा में जान परियो कि नहीं बेयर एक्ट हमको पढिया में पड़िबो ओके बुझि पाले सो we'll stop here and take a break for 10 minutes तापर हमें फंडामेंटल राइट्स रो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रा करिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रा मु मॉर्निंग रे जोडा देथिली ग्रुप रे ओके 60 टा खंडे अछि 60 क्वेश्चंस अराउंड देयर सो सेटा में गोटे गोटे करके ताको डिस्कस करिया बहुत बड़ा रिपीटेशन हेछि 60 क्वेश्चंस में देखा जाउची सेटा अराउंड 18 टा की 20 टा क्वेश्चन अछि सेटा रिपीटेशन हेगी एते बडा हे जाइछि तो से क्वेश्चन पढिले को पॉइंट्स रहइबो हम आंसर रे दैट वी विल डिस्कस ओके सो वी टेक अ ब्रेक फॉर 10 minutes and after that we'll continue